Assalamu alaikum students. Now we are going to solve question number 13, and in this question it says that if x is so small that x cube and higher power can be neglected, then show that nth root of 1 plus x is equal to this one. So what is the nth root of 1 plus x? So nth root of 1 plus x is basically 1 plus x power 1 over n, and if we expand this through binomial series, it is equal to 1 plus nx plus n minus 1. If we take like this power is considered n in the general term, right? So 1 plus this power nx plus n is basically 1 over n. So 1 over n minus 1 x squared divided by 2 factorial. So basically we have to expand this one and then we will ignore x cube and higher power, and then we will make expansion of this equal to this one, and which ultimately will be equal to 1 plus x whole power 1 over n, right? So let's expand this one. So it will be 2n plus 1x divided by 2n plus n minus 1 x, right? And if we take 2n common, so 2n 1 plus n plus 1 divided by 2nx, and again if we take 2n common from here, so 2n 1 plus n minus 1 divided by 2nx, and these will be cancelled, right? And we will leave this as it is. So 1 plus n plus 1 divided by 2nx, and if we take this to numerator, it will be 1 plus n minus 1 divided by 2n, n minus 1 divided by 2nx and whole power minus 1. And now we are going to expand this one, right? So it will be 1 plus n plus 1 divided by 2nx and 1 plus nx, so n is this one minus 1, right? So minus 1 n minus 1 divided by 2nx, and then plus again minus 1 minus 1 minus 1, and this n minus 1 divided by 2n x square and divided by 2 factorial. And we are not going to write the third term, which is x cube, because it said that ignore x cube and higher power, right? So now 1 plus n plus 1 divided by 2n x and 1 minus n minus 1 divided by 2n x, and here we have 2 minus, it will be plus, and it will be plus 2 divided by 2 factorial, and apply square on numerator and denominator, so it will be n minus 1 square x square divided by 4n square, right? Now we can cancel these two, and now we are going to multiply these two brackets such that we will not write x cube, okay? So it will be multiply 1 with every term, so it will be 1, or we can write it over here. So 1 is going to multiply with every term, so it will be 1 minus n minus 1 divided by 2n and x, and then plus n minus 1. If we apply the square, so it will be n square minus 2n plus 1 minus 2n divided by 4n square x square, okay? And now we are going to multiply this term with these two only, because if you multiply this x with x square, so it will become x cube, which we don't need it over here. So just multiply the second term with the first two terms of the next bracket, so it will be n plus 1 divided by 2n. And again if you multiply these two, so it will be minus n plus 1 n minus 1 divided by 4n square and x square, right?
So these are those terms which are up to less than x cube, right? So now we can add these terms. Okay, so it will be 1 and x and these 2x. So it is, what is common over here, x divided by 2n. So plus x divided by 2n is common, so it will be n plus, if we write this first, so n plus 1 and this one, so minus n plus 1. This minus is multiplied with this n, so it will be minus n plus 1, right? And if we take x square by 4n square common, x square by 4n square common, so it will be n square plus 1 minus 2n, and this is basically equal to n square minus 1. ठीक है ना, यहाँ पे फार्मूले अप्लाई करें a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस n स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा अगर हम ये माइनस मल्टीप्लाई करें इसके साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा यहाँ पे, x डिवाइड बाई 2n इंटू 2 प्लस x डिवाइडेड बाई 4n स्क्वायर इंटू, यहाँ पे ये n स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो 2 माइनस 2n आ जाएगा, ठीक? अब यहाँ पे ये कैंसिल करें तो 1 प्लस 1 बाई एन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन करें, 2 कॉमन हो गया, यहाँ पे आ गया 1 माइनस n आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 इस 4 के साथ, तो 1 बाई 2 रह जाएगा, और अब हमने इसको इस हालत में रखना है 1 बाई n। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से n कॉमन करें, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 बाई एन एक्स प्लस, यहाँ से n कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा n 1 बाई एन माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर, और यहाँ पे x स्क्वायर। तो इस n को कैंसिल करें इसके साथ, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन एक्स प्लस ये 1, ये जो n है यहाँ पे लिख लें 1 बाई n, ये यहाँ पे 1 बाई एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और इस 2 को नीचे फैक्टोरियल में लिख लें, ठीक है? तो अभी आप चेक करें कि ये जो टर्म्स है, फर्स्ट 3 टर्म्स, वो इसके बराबर आ गए हैं। तो इसकी जगह पे अब हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एन विच इज़ द nth रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, यानी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स और यहाँ पे nth रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। Okay students, now we are going to solve question 14. It says that if x is nearly equal to unity, then show that this is equal to this. So if x is equal to unity means that x is approximately equal to 1, so either it will be little more than 1 or little less than 1. So we can write x as 1 plus h. H is like some very small number in decimal, right? So if we take x is equal to 1 plus h, then we will put value of x over here in the left hand side, and then we will try to make it equal to the right hand side. Okay, so it will be left hand side is equal to px power p minus qx power q, and just put the value of x, which is 1 plus h power p minus q, 1 plus h power q, and now expand this, right, up to just 2 terms. Okay, so it will be p 1 plus ph, and ignore the next term, and minus q 1 plus qh, and like there are some terms but we are ignoring those terms, right? So multiply p with these 2 terms, so it will be p plus p square h minus q square h.
So write p minus q separate, and now take h common from here. So it will be p square minus q square. Okay, and now we can factorize this p square minus q square. So which will be equal to p minus q plus h. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p plus q and p minus q, right? So now take this p minus q common. p minus q common, so it will be 1 plus h. h के साथ क्या आ जाएगा p plus q. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे p माइनस क्यू अपनी जगह पे आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस h पावर p प्लस q, क्योंकि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस n x, ठीक है ना। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे इस टर्म को तो 1 प्लस, और ये जो n है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली आप h को यहाँ पे लिख लें फिर के आसान हो जाए, ठीक है। तो ये 1 प्लस x पावर n हो गया है। इसको एक्सपेंड करें तो वापस ये आ जाएगा अगर आप फर्स्ट 2 टर्म्स लाना चाहते हैं। अब x की वैल्यू पुट कर लें, p माइनस क्यू, 1 प्लस h हमने किसके बराबर लिया था, x के बराबर लिया था। तो 1 p माइनस क्यू x पावर p प्लस q, ठीक है। तो इसका प्रूफ है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।